anybody to forget the question later on. Hindi, English, okay? Mix. Yeah, mix is okay. Okay. So cyber security, online security, we're going to talk about that today. What it is, what are the things that you need to watch out for, some of the precautions you need to take, what people do. We're going to cover that. कुछ लोगों ने मुझे बोला कि we need to learn computer also, so we can do a separate computer class, basic class. So today is only about online security. So about me, I work currently as a senior agile coach. What that means is I don't do anything basically. I coach people, जो software developers होते हैं, software development में all levels from developer, quality assurance people, managers, VPs. So I work with all levels to coach them on best practices of how to develop software and to align them with faster, how to market the, how to send the software faster to the market. So that's kind of the job I do. For my education, I have bachelor's in computer science. I did that from University of Pune in India. MBA I did from University of Miami. And I also have master's in project management, which I did from Washington University. And SAFE SPC, that enables me to do my current job. So SAFE is basically it's an organization जिसने develop किया है best practices to develop software with smaller teams. तो हम लोग एक काम करते हैं तो let's say we do something which will take 2 months. अगर 2 लोग उस काम को पैरेलल में करें तो वो 1 महीने में हो जाएगा. So there are techniques like that where people can do things in parallel and develop software faster. So basically that's what my main objective is right now. My main work is right now. Enough about me. So what is online security? Online security is very simple. It's a set of rules and actions that we can take to protect our data and protect our privacy, mainly from the cyber criminals. Kiss type ka data? What do we mean by data when we talk about online security? So ye kuch examples hain. These are not everything, but these are main examples. Credit card information, that's your personal data. Driving license information, passport information, financial banking information, your name, mailing address, social security number, all that is your personal data. Date of birth, gender, place of birth, religion, zip code, ये सब हमारा personal data है. This is what's considered as personal data by governments, companies, officials. जो लेफ्ट साइड में है ये पर्सनल डेटा ऐसा है जो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है. Credit card, you can identify who it is exactly. They can look at that, your mailing address, they can identify who we're talking to. That's directly identifiable to you. The right side with your personal data, date of birth, gender, that's more generic. That cannot identify you by itself as a person, but that data can be used along with other data. Let's say somebody knows your zip code, your race, your gender. They might be able to, with a collective unit of a few data points, they can identify you. But by one data point, they cannot. So it is very important to understand what type of data we give out to people. So ये सब जो है, this is all our personal data. Online privacy, what is it? Online privacy is keeping our data private online. It's basically literally what it says, online privacy. We need to keep our data private. So when we are browsing online, when we are purchasing things online, when we are doing interactions online, आजकल सब online ही है. So what does online privacy mean? So we're going to go through some examples to take a look at what things that can harm you and how to protect yourself from that. कौन collect करता है हमारा data online? Basically everyone.
Everybody collects our data online. These are some examples. Corporations, financial institutions, जो banks हैं आपके stock market institutions हैं, governments. Government has everything that you have. Every person's point from you'll be surprised. जो cops होते हैं जब when they pull you, you'll be surprised what they can see on their screen. They can see everything about you. Social media providers, Facebook, WhatsApp, um, X, they have tons and tons and tons of data, and that is their business. Social media providers जो हैं और email providers जो हैं, their business is not social media, their business is data. They thrive on data, they survive on data. If they do not collect your data, they will die. These companies will die literally on that day if they stop collecting your data. That is their business. Online shops. Enthusiasts like me, people just search around for data. Sometimes I meet people and I just look and it's surprising कितनी information मिल जाती है लोगों की, especially after social media. People like to put things on Facebook के आज मैं यहाँ पे lunch कर रहा हूँ, I'm visiting this place. It's amazing how much information you can find about people. On the other side, scammers, they are interested in your data. Cyber criminals, ad agencies, they are the biggest user of data, private data are ad agencies. Healthcare providers, आप hospital में गए, आपने कहीं से medicine खरीदी, they have your data. Utility, phone company providers, service industry, आपने किसी से कुछ services ली, they have your data. Entertainment, travel industry, that's another industry that thrives on data. Without data, entertainment and travel industry will, let's just say their profits will cut drastically if they stop using data without your knowledge. Mostly ये सब आपका data use करते हैं without your knowledge. You have no idea what they're using your data for. कैसे use करते हैं लोग data? जो the good people, I'm not talking about cyber criminals yet, but जो अच्छे लोग हैं, जिन companies को हम पसंद करते हैं, जिन companies से हम रोज business करते हैं, this is how they make money from your data, not the money you're giving them for services, but the money they make selling the data. Targeted ads. Can somebody give me an example of targeted ad? What is it? What is targeted ad? Targeted ad is suppose you like something or you've been eating in particular restaurant and particular kind of food, then they target those kind of restaurants to your this. Yeah, exactly. They know your data. Yeah. And they can target your ads towards that data. Yeah. मेरा एक friend है, actually I was in Citrix before, so he was my colleague. So one day he started to get emails from Amazon and other places. Congratulations, you're pregnant. And he was so surprised क्योंकि that was true, his wife was pregnant, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ अपने पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं बताया था. So they were like, how? तो फिर उसने रियलाइज किया कि उन्होंने किसी और के लिए, किसी फ्रेंड के लिए Amazon से बेबी डायपर्स खरीदे और उनके जो खरीदने का पैटर्न है, अल्कोहल कम यूज हो गया, ये सब भी कम यूज हो गया, तो उससे Amazon ने फिगर आउट किया कि भाई and he's a pretty smart guy. It took us a while to figure out क्या हो रहा है. कभी आपने देखा है कि भाई आप अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं या आपने कोई सर्च करा और उसी चीज के एड्स आपको आने लगते हैं? Exactly. I'll talk about that. That's a very important point. Yeah. Thinking. Yeah. Yeah, it happens. So that's targeted ads. Retargeted ads are used by companies जैसे आपने Costco पे आपने केले खरीदे, bananas. Next time you go to Costco, it will recommend, hey, do you want bananas, by the way? Yeah. Right? It gives you the items you missed that you. Yeah. Oh, you forgot about. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Oh, you haven't bought your cleaning supplies in 6 months. So those are retargeting because they want to resell the same things to the consumers.
Selling data to others, that's a pretty straightforward. आपका जो भी email address है, date of birth है, they are worth money. तो ये जो agencies होती हैं, they sell your data to other people. Google, you think Google it doesn't have your data? I can guarantee you, Google has every information about everyone in this room. Everything, you know. और ये इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज के, एडसेंस, एफिलिएट प्रोग्राम, ये सब क्या है? ये सब वही है, टारगेटेड एड्स. दे बेसिकली सेल योर डेटा टू. गूगल क्या करेगा कि आप, अगर गूगल ने 1 मिलियन कंज्यूमर्स को ऐड डाला, सपोज मैं एक कंपनी हूँ, आई गो टू गूगल, आई वांट टू एडवर्टाइज ऑन गूगल, एंड एक 1 मिलियन कंज्यूमर्स के लिए उन्होंने मेरे से चार्ज किया, सपोज लेट्स जस्ट मेक अप अ नंबर, $1,000. तो उस 1 मिलियन कंज्यूमर्स में क्या पता वो बच्चों को जा रहे हैं. लेट्स से माय प्रोडक्ट इज अ बुक, मैंने बुक लिखी है, तो वो 1 मिलियन में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझे नहीं पता, राइट? बट इफ दे आर यूजिंग एडसेंस, affiliate program, targeted ads, all that collective data, so Google will say, okay, instead of $1,000, we're going to charge you 10,000, because the 1 million people we're going to send your data to are the people who are interested in these type of products. या तो उन्होंने कभी खरीदा है, या उन्होंने कभी सर्च मारी. गूगल पे आपने सर्च मारते हैं, they store every single keystroke you make, every single keystroke. मैं कभी भी अपने ब्राउजर में लॉग इन नहीं करता गूगल में. आई ऑलवेज यूज अ सेपरेट ब्राउजर फॉर गूगल सर्चेस. How do you get the private? Sorry. All private mode in does is it doesn't store cookies on your server, your computer, but बाकी सबको कुछ नहीं परेशान करता है. बेसिकली दैट्स लाइक, ओके, अगर कोई आपका कंप्यूटर खोल के देखे तो आपकी सर्च हिस्ट्री नहीं देख पाएगा वो, बट दैट्स ओनली ऑन योर कंप्यूटर. वो बाहर पे जो डेटा जा रहा है वो जा रहा है. प्राइवेट मोड डजंट हेल्प विद दैट. प्राइवेट मोड जस्ट helps people keeping their history wiped clean. That's all. So when you are saying they have different searches use करते हो, तो जैसे मैं Firefox, Yeah. जब मैं लैपटॉप पे होता हूँ, yeah, तो आई डेडिकेटेड माई Firefox फॉर माई फाइनेंशियल नीड्स. okay. तो Firefox पे मैं किसी ईमेल नहीं चेक करता, कभी भी कुछ नहीं करता, सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ. उसी तरह मैंने ऑपरा ब्राउजर रखा हुआ है सर्चेस के लिए. ऑपरा ब्राउजर पे मैं कभी किसी चीज में लॉगिन नहीं करता, उसी में खाली सिर्फ सर्च करता हूँ. That is only for That's only for my searches. और फिर क्रोम है और एज है. आई यूज क्रोम एंड एज फॉर माई अकाउंट्स. कुछ ईमेल वगैरह के लिए क्रोम और कुछ के लिए एज. जैसे टेम्पल का सारा काम है, आई डू ओनली ऑन एज. आई डोंट मिक्स विद एनीथिंग एल्स. तो दैट्स माई personal preference. I'm not saying it will protect you or it's the best thing to do. Like, I'm just sharing something I do. So just to make awareness के भाई, आप जब सर्च इंजन में जाते हो, it will tell you कि हाँ, आपने अगर लॉग इन किया तो we will sync all your devices. We are providing a benefit from it. They're lying. What they want is they want all that data from all your devices. They can identify कि अच्छा ये फोन भी इसका है, अच्छा ये भी इसका है. Okay. So it helps them. It has no benefit for you, or at least personally, I don't find any benefit. Some people will. So those are some of the ways they make money from data. And you may think कि भाई चलो वो पैसा कमा रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है. उसी तरह जो ये होते हैं, जैसे आजकल टिकटॉक स्टार्स हैं, यूट्यूब स्टार्स हैं, तो यूट्यूब 1000 आपके लाइक्स हो गए या वॉच हो गए, 1 मिलियन वॉच हो गए, पैसे देता है गूगल, Yeah. पैसे देता है इंस्टाग्राम को. Why? Because You bring in. those are real people who are watching them are real. इनको डेटा कलेक्शन हो रहा है, किस टाइप के वीडियोस लोग यूज कर रहे हैं, और फिर वो एड्स उस पर टारगेट करते हैं. तो वो जो मनी उनको दे रहे हैं पर क्लिक, पर वॉच, वो मनी आपके डेटा से दे रहे हैं. So Chrome you are using it's a part of Google Chrome? Yes, Google. It's same thing. Chrome is same thing as Google Chrome. So I would, unless you have a need, I mean, I really don't want to
change your personal preferences. लेकिन think about it कि do you have a need to log into the browser? And if you don't, then why? But some of the people, they do not know that we could separate this and keep it Yeah, separate. exactly. And that is what you are explaining us Yeah. today, to create the need Right. to do that. Yeah, because awareness नहीं है तो पता नहीं चलता. तो ये class awareness के लिए ही है. Yes. This is the purpose of this lecture today. We log into Fidelity from the same probe, we log into this from. Yeah. the same. So now Google knows आपका Fidelity में account है, आपका Bank of America में account है. But So it's amazing कि इस छोटे से डेटा का क्या क्या यूज कर सकते हैं वो लोग. कि अच्छा आप स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है, आपको उस पे ऐड देंगे. Sometimes we buy the airlines ticket, we click 4-5 times, उसको मालूम पड़ा है उसको डॉलर जाना है. Exactly. So they change the price after. Exactly. You click continue, बोला equals for dollar July 18. Yeah, exactly. That happened then. Yeah, and travel industry is one of the biggest users of data. जो travel industry है, क्योंकि they want to understand people कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. It's all built on that. तो ये data uses थे, they were good. And I'm calling them good only because there's no direct harm to you. But personally, I feel harm कि कोई मेरे data से monetize कर रहा है अपने आप को. Why do people need to know कि मेरे को BP का medicine ले रहे हैं या diaper खरीद रहे हैं? Why does this nobody's business? So I personally feel it's still violated. My privacy is violated because of that. Now let's take a look at bad, worse examples. Sell data to hackers and criminals. And I left the word out, terrorists, but from the presentation, but in all of this, they are built into that as well. अभी मेरे एक friend के शादी के website पे she met with a guy. This happened last year. और उसने बोला कि I need to send some money to my friend, but I'm not able to. वो 2-3 महीने से they were romantically involved, and the guy said, "Oh, I cannot send that money to my friend. Can you send the money to my friend, and I'll transfer money to you?" And he transferred money to her account, and she sent that money to his friend. And when I heard that, I was so mad at her. I mean, he can transfer to her, but he cannot transfer to his friend. Number one, red flag, right? A big red flag. Second, she didn't know him. All they did was talk a few times on the phone. That's all. Even personally, we meet kiya to kya hai? He's a stranger. And who knows कि would money, this is money laundering to me. Yes. क्या पता वो money किस use के लिए जा रहा है, criminal use के लिए जा रहा है, कहाँ use के लिए जा रहा है, and now she is in the middle of it. Another thing could be that he might be channeling 10 people to do the same thing, you know. Yeah, So that's how they hide money for illegal activities. It's a placement of money. Yeah. They can release personal data in public domain. अगर पकड़े जाने का डर होता है तो what this is the first thing criminals do. They threaten के पुलिस को threat करते हैं कि will release all the data. Extortion, ransom, blackmail. Especially young generation में बहुत हो रहा है जहाँ they meet online and they on Facebook they have everything, on Instagram they have everything about them, their location. Instagram, Facebook, you know, you can turn your location on, so they know exactly where you are. तो बहुत stalking कर रहे हैं लोग. इंडिया में तो बहुत हो रहा है ये. फिर हम तुम्हारे वीडियोस तुम्हारे फोन से डाउनलोड कर दिए, तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे, you know, unless you do this or whatever. तो extortion, blackmail बहुत हो रहा है. And it's so much so कि मतलब everyday life में we meet people who do this. ऐसा छिपे हुए criminals नहीं है कि कहीं पे hide कर रहे हैं. These are friends. People consider friends. Identity theft. कोई आपकी identity चुरा के आपको उसको यूज कर सकता है. One example is loans ले सकते हैं, credit card ले सकते हैं उस पे. Even आपके tax return file कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा. उन्होंने tax return file कर दिया, सालों साल तक नहीं पता चलेगा. And phishing जो होती है, जो लोग
डेटा को डेटा को यूज करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे मेरे पास ईमेल आए कि भाई हे संदीप, आई एम योर फ्रेंड एंड ही से संदीप, सो थोड़ा क्रेडिबिलिटी हो जाती है कि भाई दिस पर्सन नोज कि हु आई एम। So from that data, they can say, oh, I visited this place. It's really nice. You and your wife did great. I remember the other day we were talking about this and that. And you click on that link. Basically, phishing is to get to do you some action, give them more data. उसमें अच्छा आपका या phishing का हो सकता है कि भाई your email account got hacked and now you need to verify it and click on this link to enter your login information. But basically, all you're doing is giving information to them. Social engineering में people use the data to get into head of other people, make them feel friend. जैसे अगर आप Facebook है तो Facebook पे आप आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट आए एंड इट्स अ कॉलेज फ्रेंड, 20 साल से नहीं मिले या वट एवर, सपोज कोई स्कूल का फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, and आपको recognize नहीं हो रहा कि hey, I am your friend from that such and such place, we haven't talked for 20 years. What will you do with that friend request? आपको याद नहीं आ रहा कुछ, what will you do? Accept नहीं करोगे, कर भी लोगे, हो सकता है, right? और अगर आपको नाम याद आ रहा है फिर कि हाँ ये तो था, फिर क्या करोगे? कर लोगे, कर लेंगे। So basically it could be anybody. और अगर आपको नाम याद नहीं भी आ रहा बट यू सी कि उनके फेसबुक प्रोफाइल में ऑलरेडी 10 फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल के, फिर क्या करोगे? एक एक जो मैंने सबसे पहला ऑनलाइन फ्रॉड का केस सुना था, दिस वाज लाइक 15 इयर्स अगो और 12 एटलीस्ट 13 इयर्स अगो, जब व्हाट्सएप नया नया था। तो व्हाट्सएप पे एक एक बंदे ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में किसी तरह वो शामिल हो गया, फ्रेंड्स का ग्रुप था, ही गॉट एक्सेस टू दैट ग्रुप। सो ग्रुप में कोई भी आता है एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। सो देन ही लुक्ड अप वन पर्सन, अ गाय, फेसबुक पे ऑल ही गॉट फ्रॉम दैट फेसबुक इज उसके प्रोफाइल फोटो एंड फुल फेस, आई एम सॉरी नॉट फेसबुक, व्हाट्सएप पे, दिस वाज व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप पे खाली उसका प्रोफाइल पिक्चर और फोन नंबर मिला, और कुछ नहीं मिला, नाम भी शायद मिल गया वो। तो उसको यूज करके ही वेंट टू फेसबुक एंड ही केप्ट सर्चिंग एंड सर्चिंग एंड सर्चिंग एंड सर्चिंग until he found that picture. और उस पिक्चर से फिर वो फेसबुक का अकाउंट मिल गया उसको, उस बंदे का। देन ही डिडंट फ्रेंड हिम, he sent friend request to a lot of his friends, some of them accepted. Now he approached this guy कि भाई मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, you remember me, we haven't spoken in a long time, my name is such and such, and oh yeah, so that guy accepted कि अच्छा हाँ मेरे तो बहुत सारे इसके, this guy looks like he's from my school, he has a lot of friends from the same school, we have a lot of friends in common. Facebook, WhatsApp ये सब देते हैं ना आपको कि भाई you have these friends in common, right? So and then after that, this guy started talking to him. Here, let's remember old days. And हम लोग सब पुराने दिनों की बात याद करना बहुत पसंद करते हैं, golden days, right? And eventually, long story short, basically he social engineered him into giving him money. कि मेरे को अभी पैसों की shortage है थोड़ा, मेरे को दे दो. And they were good friends, so why not? And that is a scam. So this was a long-term scam जिसमें उसने बहुत मेहनत किया, लेकिन आजकल with AI, with automated tools, with so much, this is 15 years ago. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, इट्स वेरी इजी टू डू दीज थिंग्स। और इंडिया में बहुत हो रहा सोशल इंजीनियरिंग का, जहाँ फॉरेन कंट्रीज से लड़कियां हमारे आर्मी पीपल को टारगेट करती हैं, दे बिकम व्हाट्सएप फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, दे स्टार्ट romantic relationships, and then they ask them to send, they basically in social engineering you won't know what the other person is doing, it will all seem innocent कि अच्छा ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन पूछा, ओ आपका एक बचपन का डॉग था ना, वो क्या नाम था, तो बेसिकली आप डॉग का नाम बता दोगे, और आपकी मम्मी का क्या नाम था ये बता दोगे, डेट ऑफ बर्थ बता दोगे। लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट में जाओ, वो जो आपकी सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन रखते हैं वो क्वेश्चन क्या है,
आपका फेवरेट स्पॉट क्या है, आपका पहला डॉग कौन था, आपका मदर का नाम क्या था, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है। बेसिकली यही सब इंफॉर्मेशन होती है। दैट सोशल मीडिया के थ्रू दे कैन गेट इन योर हेड, बिकम फ्रेंड, एंड इट विल ऑल सीम इनोसेंट कि अच्छा ये कुछ शक भी नहीं होगा कि ये सब इंफॉर्मेशन पूछ नाउ एक्चुअली समवन मेंशन, आप शायद लक्ष्य भाई आपने बोला था कि हम कुछ जैसे बोल रहे हैं कि कुछ सोच रहे हैं बोल रहे हैं, बाद में आपने भी बोला था कि हम कुछ सोच रहे हैं बोल रहे हैं, तो ऐड आने लगते हैं उसके। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ये सीरी, अलेक्सा, कोटाना, गूगल, ये सब जब आप बोलते हो हे सीरी, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इंटरनली इन सीरी? No, they're not collecting any data. You just said, "Hey Siri," right? वो आंसर कर वो आंसर कैसे करती है? जो आपने "Hey Siri" बोला, वो जाता है, सीरी किसका है? सीरी इज एप्पल का। तो वो जाता है एप्पल के सर्वर पे, आपका "Hey Siri", वहां से वो इंटरप्रेट होता है, फिर वो एक्शन भेजता है सी डिवाइस को कि ये करो। आपने कहा प्ले राज कपूर सॉन्ग्स, राइट? ये कमांड गई गूगल के, एप्पल के, अमेजोन के, जिसका भी यूज कर रहे हो, एलेक्सा वगैरह, उसके सर्वर पे, एंड वहां से इंटरप्रेट होके वापस आई। तो ये अभी 4-5 साल पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ कोर्ट केसेस अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम डेटा आपका यूज करते हैं सिर्फ आपके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बट दे वर सेलिंग दिस डेटा। एक केस हुआ था जिसमें, बहुत से केसेस हुए थे जिसमें एलेक्सा ने, या एलेक्सा की डिवाइसेस भी होती है, राइट? Yeah. तो उन्होंने हर टाइम ऑन रहती है, गूगल की भी होम डिवाइस है। तो हस्बैंड वाइफ प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे थे, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स। तो इंडिया के कपल थे अमेरिका में, तो क्या हुआ कि जो भी फॉर वट एवर रीजन, एलेक्सा ने उनकी एक्शंस कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके उनके ईमेल लिस्ट में सबको मास ईमेल कर दिया। तो उनके मम्मी का फोन आ रहा है कि भाई तुम मुझको ये सब क्यों कर रहे हो? And then they didn't know। बच्चे तो, ये जो डिवाइसेस है ये हर टाइम सुनती है। वो हमारा पहले 10-20 साल पहले होता था ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ सुन रहा है, अब वो रियलिटी है। अब आपके टेबल के भी कान है, अब आपके हर चीज के कान है। जो भी आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि हे सीरी नहीं बोला तो ये नहीं सुन रहे, दैट्स रॉन्ग। और हे सीरी कैसे पता चला उनको बोला? क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग एवरी सेकेंड, और वो सब कन्वर्सेशन जारी है कहीं ना कहीं, वो कन्वर्सेशन यूज हो रही है किसी ना किसी, और वो आपका पर्सनल अकाउंट है, उसमें आपका एड्रेस है, ईमेल है, उस डिवाइस से एसोसिएटेड, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, डिवाइस से एसोसिएटेड, दे नो एग्जैक्टली विच हाउस दिस कन्वर्सेशन इज कमिंग फ्रॉम। इट्स वेरी आइडेंटिफाइबल। तो वो सब आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबॉडी, बट दिस इज रियलिस्टिक। सो यूज एज यू विल, बिकॉज हम सोचते हैं लाइट डिम हो जाएगी तो सीरी को ऑन रखें, बिकॉज वी कैन टेल हे अलेक्सा डिम आवर लाइट्स और व्हाटएवर। यस, इट्स वेरी कन्वीनियंट, बट देन वेयर इज दैट बैलेंस? टारगेटेड एड्स, रीटारगेटिंग का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया ऑलरेडी। सो but this is one of the biggest use of our data, massive use। तो जितने भी कंपनीज होते हैं, बेसिकली all these companies provide you with options to opt out of data, लेकिन इतना डिफिकल्ट बना देते हैं वो कि इट्स इम्पॉसिबल टू ऑप्ट आउट ऑफ डेटा। आपको 50 जगह क्लिक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल डोंट थिंक अबाउट इट। सेकंड ऑफ ऑल, इवन इफ दे थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। लेकिन जितने भी अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, गूगल है, अमेजोन है, you can wipe your history from their servers, you can wipe your some personal information। सब कुछ तो वाइप नहीं कर सकते because they still need to service you, but आपका हिस्टोरिकल डेटा काफी हद तक आप वाइप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में एक ऑप्शन है कि डू नॉट स्टोर माई हिस्ट्री। आप वो ऑन कर दें तो यूट्यूब पे जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो उसकी हिस्ट्री ऑन
एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे से कि वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके, ऑल ऑफ दीज हैव, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड देम, बट इफ एनीबडी नीड्स हेल्प आई एम विलिंग टू हेल्प विद दैट. और वो चेंज करते रहते हैं, हर साल ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट. बट आपके बैंक्स में डू नॉट सेल इन्फॉर्मेशन का आपको एक, अगर आप अब तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन पेपर स्टेटमेंट आती थी, उसमें एक फ्लायर आता था उसके साथ कि ऑप्ट आउट. वो क्या था? वो ये था कि भाई हम आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं, आप कंट्रोल करो उसको. वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट टू एनीबॉडी. यू कैन ऑप्ट आउट कि भाई मेरे ऐड में यूज मत करो मेरी इन्फॉर्मेशन. सो एवरी कंपनी हैज दैट, रिलायबल कंपनी हैज दैट. लेकिन जो आपको ईमेल आती है, स्कैम आते हैं, डू नॉट ऑप्ट आउट ऑफ देम. जैसे आपको स्कैम ईमेल आया, उसमें अनसब्सक्राइब का बटन है, डू नॉट क्लिक दैट, बिकॉज आपने क्लिक किया तो उनको कंफर्मेशन जा रही है कि ये रियल पर्सन है. दिस ईमेल अकाउंट इज रियल, इज द ऑपोजिट. तो अगर आपको किसी भी चीज पे शक है, वो सही शक है. No question. Email symbol. Sometimes it's very difficult to identify that this is a fake email and this is a real email. Yes. Because simple example, coming from CVS or the pharmaceutical deals, and there is a similar email coming from CVS, and you could not identify which one is the real Yeah. email and which one is the fake. एग्जैक्टली. तो उसके लिए क्या है कि अनलेस यू आर पेइंग अटेंशन यू वोंट. लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आपका माउस होता है ना, फोन पे थोड़ा मुश्किल है, बट फोन पे भी आपको उसको प्रेस करके रखे ना, तो इट विल शो यू विच लिंक इट इज. Okay, who is the sender or which? नो, लिंक का पूरा डिटेल्स आएगा. जैसे उसमें आया CVS, तो उस पर वो क्लिक करोगे तो वो बहुत बड़ा URL होगा. तो इफ यू कीप इट क्लिक ऑन फोन, इट विल शो यू, इट विल टेक प्रैक्टिस. इफ यू क्लिक इट विल गो समवेयर. बट कंप्यूटर पे बहुत इजी है. ऑल यू हैव टू डू इज हवर योर कर्सर, माउस कर्सर ऑन अ लिंक, इट विल शो यू द एंटायर लिंक. आपके कई कुछ ब्राउजर में स्टेटस में आएगा, कुछ ब्राउजर में पॉपअप में आएगा. तो यू कैन सी द लिंक, एंड लिंक से काफी तक समझ में आ जाएगा. जैसे अगर आपका टेक्निकल सपोर्ट है कि भाई बेस्ट बाय टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन उसमें लिंक आ रहा है xyz.com ब्ला 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 ब्ला, तो वर्ड तो लिखा है टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम बेस्ट बाय, लेकिन लिंक में bestbuy.com का लिंक नहीं है, कहीं और का लिंक है. और bestbuy.model.com या bestbuy.xyz.com, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ होगा. एक क्वेश्चन है. हाँ जी. आपने बोला कि अनसब्सक्राइब नहीं करना ईमेल में. अगर तो उसको अननोन है, निकाले, बार बार आए उसको डिलीट कर दो. डिलीट कर. 50 बार आए, 50 बार डिलीट कर दो. अच्छा, फिल्टर सेट कर सकते हैं ईमेल में कि भाई इस एड्रेस से ईमेल आए, उसको डायरेक्ट डिलीट कर दो. और एक बार आया है तो डिलीट करते हैं पहले आपको, इफ यू नो कि दिस इज नॉट द राइट ईमेल, just click as if it's a scam. Spam. Or put it in junk, so it will directly go into junk next time. It won't come to you. Block Yeah. it. Like, put 2 or 3 times spam at the top. Yeah. Then Yahoo will figure out that it's scam है तो 5 बार scam मिल जाएगा. That is one. So they will take care of, from the way which address is coming from and everything, they'll automatically put the filter. Another stuff is unsubscribe. And भैया आप थोड़ा टेक्निकल है, बट जब ये CVS का एग्जांपल दे रहे हैं तो check the जो whoever is sending it domain, how to find it. Has to be last has to be cvs.com. Otherwise, if it says your pharmacy, cvs.pharmacy.com, that's illegal address. Last 2 words has to be cvs.com. So it's a Bank of America, last 2 words is BS, Bank of America. Miss, he can show you. Yeah, we can take a look at that. So let me actually open my email. So जैसे मैं बता रहा था ना, I have 1 2 3 4 5 ब्राउजर्स, और ये वाला मेरा ब्राउजर है जो मैं गूगल के लिए यूज करता हूँ. सो इफ यू ओपन एन ईमेल, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किसने भेजा है, क्या है,
इसमें अनसब्सक्राइब करना चाहते हो, ठीक है, लेट मी गो टू माय स्पैम। सो ये स्पैम ईमेल है, इसमें अगर देखेंगे तो ये बजाज फिनसर्व लिखा है, लेकिन इसमें बजाज फिनसर्व का कुछ नहीं है। एंड सो जस्ट बाय लुकिंग एट इट, जो डिस्क्रिपेंसीज ये होती है ना, नेवर ट्रस्ट देम। अगर ऐसी डिस्क्रिपेंसी है तो इट्स बेटर नॉट टू यूज दैट, प्ले इट सेफ, बिकॉज इफ योर इंस्टिंक्ट टेल यू कि भाई ये गलत है, वो गलत ही है। सो व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंड एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया, बट there are a lot of other examples also how people can become your friend without knowing you. So and then what they do is basically use that to do something. Maybe उस लड़की का नंबर दे दो, या पैसे भेज दो, या कुछ कर दो. So be aware whenever you want friend request, only accept friend request if you really know that person. Unless you are a YouTube celebrity, then you can accept everybody. But if you're not planning to do that, then be careful. फ्रेंड्स एंड फैमिली स्कैम में क्या होता है कि जैसे आपको सोशल मीडिया पे या मैसेज आया या ईमेल आया कि, एंड ये एल्डरली के साथ ज्यादा होता है कि मेरा कि आई एम योर ग्रैंडसन और योर ग्रैंड डॉटर, आई नीड मनी, आई एम स्टक हियर एंड दिस एंड दैट। सो उसमें दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर, एंड बेसिकली अर्जेंसी। स्कैम में एक चीज सबसे बड़ी जो स्कैम की आइडेंटिफिकेशन की जो फैक्टर है वो है अर्जेंसी। दे विल ऑलवेज गिव द सेंस ऑफ अर्जेंसी। हे हम फोन पे भी आएगा आपको कि भाई हम आपके सोशल सिक्योरिटी ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी चेक में अकाउंट में प्रॉब्लम है, आपको ये एक्शन अभी लेना है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से भेज रहे हैं, बोल रहे हैं आपको ये एक्शन अभी लेना, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी। ईमेल में भी लिखा होगा कि आई एम स्टक, आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर दैट, क्योंकि वो आपको सोचने का मौका नहीं देना चाहते। सो इफ देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, स्टॉप, थिंक अबाउट इट। रॉन्ग नंबर कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम, उसमें क्या होता है कि जैसे रॉन्ग नंबर आ गया कि ओ रॉन्ग नंबर लग गया, लेकिन कुछ लोग बहुत बात करने में चिट चैटी होते हैं, दे एंगेज यू इन कन्वर्सेशन, इवन आपको पता है रॉन्ग नंबर है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, एंड देन दे कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू डू समथिंग कि भाई चलो हम तो अब दोस्त बन गए, या वट एवर, कि भाई आप मेरे फ्रेंड का फोन नहीं मिल रहा, हो गया, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत, मैं शहर में नया हूँ, यू आर इन दिस सिटी, कैन यू हेल्प मी विद दिस स्मॉल थिंग। Be aware of that. Call forwarding scam. They'll say, "Hey, you know what? I'm having problem. I cannot dial this number for some reason. I got this wrong number because I'm not able to dial the right number. Can you try dialing this number for me?" Do not do that, because what can happen is, especially if the number starts with like star, star, or pound or something like that, weird character. Um, Basically, that can enable call forwarding from your phone to that phone. And now basically they are getting your calls. So these are examples. These are not all the possibilities. The possibilities are endless. लॉटरी मिल गई, गिफ्ट कैन गिव अवेज मिल गए कि आपने तो अपना बहामास का ट्रैवल आपको जीत लिया है। गिफ्ट कार्ड्स, आपके आप यू हैव वन अ गिफ्ट कार्ड from the sweepstakes you submitted in Sam's Club because you're a Sam's Club member, or you're an Amazon member. And this is a giveaway gift card, or charity के भाई हम charity में हैं तो can you help us? So, but all those links, pay attention to the links, pay attention to the sender, pay attention to the details in the email. First of all, delete it. But even if you're interested, let's say this is something that appeals to you, look at it in very, very detailed way. Make sure you're looking at everything. Spelling mistakes. जो ऑथेंटिक ईमेल्स होती हैं उसमें अथॉरिटीज से, चाहे वो किसी भी कंपनी से हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें होने के चांस बहुत मिनिमम है। लेकिन जो स्कैमर्स के होते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, वर्बेज गलत होगी, ग्रामर गलत होगी। लुक आउट फॉर ऑल दोस। और कई बार क्या होता है, आपने फ्रॉम एड्रेस देखा, फ्रॉम एड्रेस है cvs.com, लेकिन रिप्लाई टू एड्रेस है समथिंग एल्स। ऐसा भी कर सकते हो लोग।
तो आपने सिर्फ फ्रॉम एड्रेस देखा फ्रॉम cvs.com ही है, क्योंकि फ्रॉम एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं. यू कैन, व्हेन आई सेंड माई ईमेल, आई कैन मेक इट सेंड फ्रॉम एनीथिंग. लेकिन उसमें जो मैसेज का हेडर होगा, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज एंड कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू मेक अ फॉल्ट, बट टू ह्यूमनाइज इट विल लुक लाइक द ईमेल इज फ्रॉम cvs.com. बट जो रिप्लाई एड्रेस होगा वो कुछ और. दैट्स वेयर द ईमेल केम फ्रॉम. QR कोड स्कैम. QR कोड भी बेसिकली एक लिंक ही है. आप जब भी QR कोड स्कैन करते हैं तो वो लिंक कहीं ना कहीं ले जाता है. डोंट स्कैन QR कोड्स अनलेस यू नो व्हाट इट इज. चलते फिरते बाजार में बहुत मार्केट में आजकल मिल रहा है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट. व्हाट्सएप गोल्ड स्कैम. QR कोड इज एवरीवेयर अभी तो. Exactly. पेपर में भी सब जगह, बंडर में भी QR कोड लगा Exactly. है. तो फिर क्या है? Unless you know it's a secure place and you have confidence, that's what he's saying. If you are confident that that's the right, then location and the thing, then only you go. स्पेशली जैसे स्वीपस्टेक्स हैं, लॉटरी है, ये सब चीजें हैं ना, डोंट फॉल फॉर दैट. लेकिन हाँ, आप कॉस्को में गए, वहां पे QR कोड है, तो दैट इज लेजिटिमेट कि भाई हमारा ये आपको सब्सक्राइब करना है, कुछ करना है. सो treat your QR code just like you would treat a URL, a link. Basically, it's not reliable unless you know the source for sure. तो QR कोड पे unknowingly क्लिक ना करें. WhatsApp गोल्ड स्कैम. ये क्या है कि WhatsApp के WhatsApp has a new feature or WhatsApp has a new version of Gold, and it's only they're doing trial, they're doing pilot or whatever, and you have been selected to participate. वही है, उसमें लिंक्स कहीं ना कहीं जाके आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे. अल्टीमेटली इट कम्स ऑन द सेम थिंग. दे वांट योर इंफॉर्मेशन और दे वांट टू इंस्टॉल समथिंग ऑन योर फोन और लैपटॉप. वो लिंक क्लिक करोगे, आपको सेम थिंग विद अटैचमेंट्स. आपको PDF आ रहा है, EXE अटैचमेंट आ रहा है, कोई भी अटैचमेंट आ रहा है, अनलेस यू नो द सोर्स, डू नॉट क्लिक ऑन अटैचमेंट, क्योंकि उससे आपके कंप्यूटर पे वायरस, मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है. टैक्स सपोर्ट स्कैम्स. आप गूगल सर्च करते हो या तो आपको ईमेल आएगी कि भाई वी आर रनिंग ए बेस्ट बाय प्रमोशन, वन ईयर सपोर्ट फॉर फ्री फॉर ऑल योर टेक्नोलॉजिकल नीड्स. डू नॉट फॉल फॉर दैट. गूगल सर्च पे ये प्रज्ञेश भाई बोल रहे थे इंक्लूड करने के लिए. तो गूगल सर्च पे आप टाइप करते हैं कि भाई आई वांट HP सपोर्ट, तो जो गूगल पे जो फोन नंबर आएगा या जो एड्रेस आएगा, डू नॉट ट्रस्ट दैट, क्योंकि गूगल पे गलत भी हो सकता है. गो टू HP वेबसाइट, फाइंड, गेट फ्रॉम देयर. क्योंकि क्या होता है, बहुत से स्कैमर्स दे क्रिएट वेबसाइट दैट लुक लाइक hp.com, लाइक they'll create hpc.com, hpx.com, whp.com, इस टाइप से करके कुछ भी कर देंगे. या साउंडिंग या सिमिलर लुकिंग वेबसाइट क्रिएट कर देंगे. They can even make the look and feel of the website very very similar. तो आपको लगेगा आप legitimate. लेकिन और फोन नंबर में भी आपने फोन किया तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी. आप कह रहे हो कि चलो मैंने HP सपोर्ट को फोन किया, तो एंड ही इज आस्किंग फॉर माय नेम, माय एड्रेस, माय क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ऑल दैट, राइट. कि भाई सपोर्ट के लिए आपको $20 पे करना पड़ेगा, राइट. बेसिकली यू आर गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, बट योर फोन नंबर यू गॉट, इज दैट लेजिटिमेट? You thought it was because Google search ने आपको दिया है. So watch out for that. Make sure, don't trust the number blindly. Make sure you are looking at doing more thorough research. And best thing is to go to the website itself, hp.com. और hp.com में भी आपने hp.com की जगह hp.cox टाइप कर दिया गलती से, वो रीडायरेक्ट करके आपको किसी और वेबसाइट पे ले जा सकता है. So I know it's all too much, but unfortunately that's the world we live in. Crypto scams. तो crypto scams में social engineering में बहुत होता है. फ्रेंड्स बन जाते हैं. Hey, I heard about this cryptocurrency which I'm getting a very good deal, and do you want to buy it or whatever. तो जैसे पहले वो था ना, नाइजीरिया स्कैम होता था, लेटर आते थे कि भाई मैं नाइजीरियन प्रिंस हूँ, मेरा पैसा फंसा हुआ है. अब वो सब क्रिप्टो में, उस टाइप के स्कैम क्रिप्टो में बहुत आ गए कि आई कैन गेट यू वेरी गुड डील, आई कैन गेट यू दिस, आई कैन गेट यू दैट. इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रॉब्ली इज. फेक जॉब ऑफर विद टास्क कि hey, we have this nice job for you,
एंड आपको सब बहुत अच्छा लगेगा उसमें, बिकॉज इट्स अ टारगेटेड ईमेल, दे नो व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू डू फ्रॉम समवेयर, एंड उसमें लेकिन टास्क होगा कि आपको यहाँ पे क्लिक करके आपकी अप्लाई करना है जॉब के लिए, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, इस टाइप से कुछ टास्क होंगे उसमें. सो बेसिकली डोंट फॉल फॉर दैट. रोमांस स्कैम्स अगेन वी हैव कवर्ड अ लिटिल बिट ऑफ दैट, बट उसमें वही होता है कि लोग फ्रेंड बन जाते हैं एंड दे डेवलप फीलिंग्स, एंड देन अल्टीमेट गोल इज टू cheat you out of money, secrets, blackmail, something. और अमेरिका में भी ये बहुत हो रहा है कि व्हाट्सएप वगैरह पे लोग डर्टी वीडियोस बना लेते हैं एक दूसरे के, चैट करते टाइम कि भाई लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, वी आर सो गुड फ्रेंड्स, वी आर प्रैक्टिकली मैरिड, व्हाटएवर, और फिर दे कैन ब्लैकमेल यू बेसिकली. Coupons scam, hey, this is the coupon, you get 20% off of Amazon or whatever. So anything that sounds too good to be true, it probably is. Just use your best judgment. Don't fall blindly for it. कई बार कंप्यूटर पे हमको, फोन पे, कंप्यूटर पे इस टाइप का ऐड आता है कि वायरस वायरस है आपके कंप्यूटर पे. Do not click on it because they want it will install. Chances are it will install a virus on it, not scan it. उस कोई भी ऑनलाइन ऐसे स्कैन नहीं करता आपके कंप्यूटर के, आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया. तो दिस इज अनदर बिग वन. सो व्हाट टू डू अबाउट इट, हाउ कैन वी प्रिवेंट अस, राइट? लेट्स रैप इट अप विद दैट. बी स्केप्टिकल. गवर्नमेंट एजेंसी से कॉल कर रहा है, सिक्योरिटी से सर्विसेज से कॉल कर रहा है, पुलिस से कॉल कर रहा है, बैंक से कॉल कर रहा है, कहीं से भी कोई कॉल आ रही है आपको, you do not know that number. मेरे को बहुत फोन आते हैं, legitimate भी आता है कि we are calling your bank, and I know from the information they are giving it कि भाई ये legitimate call है. I don't take it even then. I call them back. I said okay, I'll have to call you back. तो फिर मैं जो बैंक है उनको वो नंबर देते हैं, इस नंबर पे कॉल करो, मैं उस पर नहीं करता. मैं जो मेरे पास बैंक की नंबर है उस पर कॉल करता हूँ. मेरे क्रेडिट कार्ड पे है, वेबसाइट पे है, मेरे स्टेटमेंट्स पे है, राइट? वो कहते हैं कि मतलब, तो इवन व्हेन आई नो इट्स लेजिटिमेट, क्योंकि वो सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू वेरीफाई यू. तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, एंड आई टेल देम पोलाइटली कि भाई नो, आई कैन नॉट, यू कॉल्ड मी, आई डोंट नो हु यू आर, आई विल कॉल बैक. Don't share personal information. This is an obvious one, but unknowingly we do this a lot of times. आजकल OTP बहुत चल रहा है, वन टाइम पासकोड, राइट? OTP हर जगह OTP यूज हो रहा है. इंडिया में मेरे मेरे मम्मी को भी मैं समझाता हूँ, वो कोई कॉल आता है, अच्छा OTP दे दो, वो दे देती है. तो डू नॉट गिव OTP. इट्स वेरी रेयर. देर आर सर्कमस्टांसेस वेयर दे नीड देयर OTP. जैसे आपने बैंक को कॉल किया आपका ईमेल चेंज करने के लिए या एड्रेस चेंज करने के लिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट करेगा, तो वो OTP मांगेगा. देयर वेरी फ्यू सर्कमस्टांसेस वेयर यू विल हैव टू गिव योर OTP. लेकिन कभी भी OTP नहीं देना, क्योंकि OTP में क्या होता है कि, और दिस गोस बैक टू योर कॉल फॉरवर्डिंग. तो उन्होंने आपका फोन का मैसेज या कॉल फॉरवर्ड कर लिए, अब आपका वो OTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कॉल उनके पास जाएगा OTP, राइट? तो नेवर गिव आउट एनीथिंग लाइक दैट. कोई भी कंपनी आपका पासवर्ड कभी नहीं पूछेगी. It's impossible. I've never run across a case where somebody asked for your password. Don't click on unknown links. We have talked about in length. Be careful with your phone. We have talked about few cases, but be very careful क्योंकि आपका फोन में भी अच्छा ये माधुरी दीक्षित डांस कर रही है, या you know, we get all these things, right? Fun videos. Be very careful what you click on. Especially मेरा जो भी friends, and I'm a very private person. I'm probably more private than I should be. कोई भी मेरे को फेसबुक का लिंक सेंड करता है, मैं नहीं क्लिक करता हूँ उस पर, क्योंकि फेसबुक पे आप वीडियो नहीं वॉच कर सकते जब तक आपका लॉगिन ना हो. फेसबुक बिना लॉगिन किए आप वीडियोस वॉच नहीं कर सकते फेसबुक. सो आई नेवर क्लिक. मेरे फ्रेंड भेजते हैं, आई पोलाइटली टेल देम आई कैन नॉट वॉच इट. एंड इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. उसमें क्या होता है, आपके सब बैंक अकाउंट में इंफॉर्मेशन में 2 फैक्टर होते हैं. एक तो आपका पासवर्ड हो गया, दूसरा OTP या इस टाइप से या कुछ और वेरिफिकेशन का डिफरेंट बैंक का डिफरेंस हो सकता है. इट्स वेरी इनकन्वीनियंट, थोड़ा हमको प्रॉब्लम होती है,
लेकिन फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव इट्स बेटर। आई नो इट्स वेरी वेरी इनकन्वीनियंट, मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन इफ यू वांट टू बी सेफ दैट्स अ गुड थिंग। But your Google system will give you that. हाँ जी, राइट। रिसर्च कंपनीज बिफोर शॉपिंग और टेकिंग एनी एक्शन। जैसे अभी मैं एक चीज़ के लिए शॉप कर रहा था, तो $300 की सब जगह मिल रही थी वही, अमेजोन पे, गूगल पे। बट देन आई डिड गूगल सर्च और एक वेबसाइट पे $59 का सेम। So I was very tempted to buy. My wife said, let's just buy it. Because, but I was like, okay, 300 सब जगह मिल रहा है, यहाँ पे 59 क्यों मिल रहा है? फिर मैंने उस शॉप ऑनलाइन शॉपिंग के थोड़ा रिसर्च किया, तो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। कोई पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है, कोई नेगेटिव रिव्यूज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। So I'm very skeptical. Maybe it's legit, maybe it's not. We don't know. So कोई अगर कंपनी जैसे आपको पता नहीं है, तो before you buy anything, don't do your research and don't just blindly fall for it. Again, urgency कि अच्छा आज ही ये डील है, अभी खत्म हो जाएगी। And I mean, it may be legitimate. I'm not saying everything is fraud. लेकिन the percentage of scams are higher than percentage of I agree with. bad people. Don't refund or forward payments. कोई आपको कंपनी ने पैसा भेजा, oh we overpaid you by accident, refund our money. Do not do that. एक बार आपने रिफंड किया, वो अपना ओरिजिनल पैसा आपके अकाउंट से वापस ले लेंगे, क्लेम करके क्या फ्रॉड हो। That happens a lot in our check cashing side. Check cash. Yeah, what they do is they send you the check, say, and the biggest scam is that when they send you $1,000 or $1,500 check, it says, go and cash this check, it's $500, or you being a surveillance this or whatever, and send us the $1,000 back. Oh, So person comes in and cashes the check on his own ID, own social security. And evidently, the check bounces. Okay, it's known fact that, so the check bounces. आपको पैसे भी नहीं मिले और 500 भी गया। Yeah, उसको जो आपने हमको भेजा, $1,000 and whatever criminal thing comes on their ID because they went and cashed the check somewhere else. And now you don't know what that $1,000 were used for. Yeah. They may be used for something Yes. which you don't want to be Yeah. associated with. Look for suspicious payment requirements. Wire transfer के थ्रू ही आप कर सकते हो पेमेंट, या इसी के थ्रू कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर relatively safe, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में थोड़ा आपकी सेफ्टी ज़्यादा रहती है, लेकिन आपने बैंक अकाउंट से पे किया, वायर ट्रांसफर किया, वो सब में सेफ्टी थोड़ा कम रहती है। But credit card also, don't do debit. Debit, the money goes away right away. Yeah. So wherever you can use credit, always use credit. Don't use debit. Okay, you feel that we use our PIN number and put it in, but the money goes out of your account right away. So once the debit is done, the money is gone. So always use credit card and you could fight it or reverse your money. Yeah. So what was that? Only send to people you trust. Zelle का मनी भी साथ एक उसी टाइम निकल जाता है। So Zelle और जो ये PayPal है, Zelle है, इनमें एक और प्रॉब्लम है। क्रेडिट कार्ड में you can fight fraud. इसमें fighting fraud is pretty much hopeless you are activity. right because we are putting up your PIN number and you are accepting Yeah. what it is. वहाँ पे मैसेज भी आता है उनका डिस्क्लेमर Zelle वगैरह में कि make sure you know this person, because उसमें आपको मनी वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑनलाइन। बेसिकली जो भी आपका कंप्यूटर का पासवर्ड है, फोन का पासवर्ड है, बैंक उसका पासवर्ड है। So I use a password manager which is stored on my computer only, but try to make your password not easily guessable. What is the safe way to store the password? Yeah, that's the main problem for everyone. Every one of you can change the password. Change the password. So there are some password management software online भी है और
ऑफलाइन भी हैं, जैसे वन पास है, इस टाइप से काफी है. डू योर रिसर्च विच एवर यू फील कंफर्टेबल विद. नो, ऐप नहीं है. वेबसाइट पे आपको साइन अप करना पड़ेगा. तो इट कैन बेसिकली whenever you need a password, you'll have to log in into that website. और उनका ऐप भी होता है कुछ का, तो you can copy password from there. So it's a paid site. Some of them are paid, some of them are unpaid. What I use is called KeyPass. It's gone now. Gone now. अब कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती है. I've been using it for 20 years. KeyPass. तो मेरा क्या है, लेकिन मैं कोई ऑनलाइन नहीं यूज करता हूँ. I keep it on my phone and on my, एक कॉपी मेरे फोन पे, एक कॉपी मेरे कंप्यूटर पे है. Those are only 2 copies in the world. फोन में आप कहाँ रखते हो? Where do you keep it in the phone? फोन में आप स्टोरेज, फाइल्स की स्टोरेज यूज कर सकते हो. Or notes. तो जो आपका जो इसके लिए ऐप है मेरे फोन में, कीपास का ऐप है, मिनी कीपास. तो दैट ऐप कीप्स द फाइल इटसेल्फ. नहीं नहीं, वहां कहीं नहीं रखता हूँ. लेकिन इफ यू आर कंफर्टेबल, अ लॉट ऑफ पीपल यूज पासवर्ड मैनेजर, जैसे वन पास है, इस टाइप के ऑनलाइन है, एंड दे आर वेरी गुड. आई वुड से पे फॉर इट इफ यू वांट टू यूज ऑनलाइन, बिकॉज फ्री वालों में दे वांट योर डेटा फॉर समथिंग. But and I mean, I can, if anybody want recommendation, text me. I'll send you a few. I don't want to mass publicize because I don't want to recommend specific ones. आज वो ठीक है, कल को खराब भी हो सकते हैं, right? Yeah, we need help. I need space. हाँ, definitely. Getting passport, I get passport. Personally, I'll reply to everybody. Older people, like, they write it down in a. No, don't do that. somewhere. You know, and they have to go to get somewhere in the kitchen or somewhere there you go. All these basic, somebody like one day also it is. Yeah, you can do that. उसके भी software आते हैं उसके. A lot of companies do that. They will give you services. You scan your receipt, and they'll keep track of your receipt. Yes. Oh, whatever you're comfortable with. I have a question about the password. See, all the sites, what we use, every month they want to have a password change. Okay, and you cannot use the password what you have used before. Okay, and a unique password. Now, our habit is something we know and we put, चाचा का नाम डाला, चाची का नाम डाला, और बीच में बर्थडे डाली, और फिर डॉलर साइन डाला या समथिंग. But how to make a unique password? There are 2 ways जो मैं recommend करूँगा. एक, अगर आप, if you have a password manager, they can actually generate password for you, and those password will be numbers and digits which you won't remember, right? But that's the safest way. Second way which I use is I have passphrases. मेरा हिंदी इंग्लिश मिला के फ्रेज है, और मेरे एक पैटर्न है, उसमें 3 पैटर्न है. जो शुरू का है वो अलग पैटर्न है, बीच का वो अलग पैटर्न है, और लास्ट का वो अलग पैटर्न है. So they cannot mingle. Yeah. और फिर मेरा एक जो फर्स्ट पैटर्न है वो एक रैंडम पर्सनल नंबर है. बीच का जो है वो हिंदी इंग्लिश का फ्रेज है, जो कि डिपेंड करता है कि मैं किस इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा हूँ या किस वेबसाइट से डील कर रहा हूँ, उसके हिसाब से वो फ्रेज अलग होता है. आई डोंट यूज द सेम फ्रेज. वो फ्रेज मेरा अपना ही जनरेशन है फ्रेज का. एंड द थर्ड पार्ट इज अ स्पेशल सिंबल, जो भी रैंडम होता है. तो आई हैव टू रिमेंबर 2-3 थिंग्स, बट आई कैन रिकॉल ऑल ऑफ देम, बिकॉज अब तो 10 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, तो आई बिकम यूज्ड टू इट. सो यू कैन क्रिएट दैट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग सेम पासवर्ड ऑन एवरी साइट, कि एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना दिया, अब वो सबसे हर साइट का अलग होना चाहिए, ईमेल्स का अलग होना चाहिए. तो you have to use a password. Good option. Something you can remember. Like you can see. Give an example. તમારા છોકરા નામ શું? I'm not just saying simple thing.
Pranav lives in Austin. Hmm. It's a long password. It takes a long time to break, even if it's a single word. Now, Austin માં તમે એક જુદી જાતનો સ્પેલિંગ મૂકો કાં તો પ્રણવની જગ્યાએ બીજું કોકને મૂકો પણ something of that sense and it's a phrase that you can remember with some special symbols or something. एक और भी काम कर सकते हैं Everybody requires a special symbol. Everybody requires a number. Something, do something, but that's longer the password, more safer. बिंदेश भाई जो बोल रहे हैं उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला इज, तो इज में आई की जगह 1 यूज कर लो। हाँ सन में ओ की जगह 0 यूज कर लो। हाँ Oh, that's a ई की जगह ना ई कैसे होता है Hmm. इसकी जगह 3 यूज कर 3 यूज Oh, कर लो। it's confusing. तो जैसे आप You are right. So how are we gonna remember all? no नहीं। you remember the phrase પછી તને યાદ તરત જ આવી જશે. I did that. आपको 3 चीज याद करनी I है। did that. તરત જ યાદ આવી જશે. But I'm not young like. आपको 3 चीज याद रखनी है। एक तो फ्रेज याद रखना है, एक आपको याद रखना है कौन से लेटर आपने सब्स्टिट्यूट किए। ये मैं आई की जगह 1 यूज करता हूँ, है ना, और किस किस वेबसाइट पे है ये phrase. In other websites. क्योंकि you don't want to use one phrase and one password for everything. Yes, no, what you could do is reverse it, you know. but that is your style. हाँ, But it is you will remember as a phrase. Yeah, and you could reverse it. and Reverse do it, that. you can do it. Yeah. Option को पहले ला दिया, Yeah, बीच में ला दिया. That way, at least, you know, this is my phrase on certain sheet. एक और भी टेक्निक है बिंदेश भाई ने जैसे बताई है सेम ही, कि आप कह सकते हो मेरा दिल है आवारा। अब वो मेरा दिल है आवारा में प्ले कर सकते हो। आवारा में एक और मैं एक ही जगह में 5 लिखूंगा या कुछ भी आप सोच सकते हो। है में HAI की जगह 1 यूज कर रहा हूँ, तो इस टाइप से आप कुछ सोच सकते हो। और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, पाउंड लगा दिया, डॉलर लगा दिया। That is a good explanation. I tell you, even if you make For everybody. Yeah. if you make a complex password, if it is 8 characters for the computers to break it, it takes few hours. That's it. Yeah. But if you just phrase, you know, I love going to India. If you put that word, it's like a 12 character long. It will take them days to break it. और जैसे मेरा में ए है, That makes a difference. मेरा में ए है, The complexity is not the difference. it does, complexity also does, but length is more important. See, this we did not know. Thank you. जैसे मेरा में है MERA, ए की जगह एट सिंबल बना दिया। तो you think about your, yes, How can you when somebody had asked for my credit card to FedEx it in New York City? And the credit card company did send it, and that person used $20,000. Of course, it was not my fault, so the credit card. The refund agent, the one gave you the credit. Yeah. So that, But any time if I complain a little bit, just immediately, oh, we're gonna give you another credit card. Oh yeah, And so- that's a big problem. yep, Because they had lost $20,000. And then I asked the credit card company that who was that person or what was the purpose of, where was it used? They couldn't give me that. they probably don't have it. the bank would not give you the if somebody uses your bank account, okay? And the bank will credit the money into your account, but bank would never give you where the money was used or who used their money. Okay, no. That is self. But, no, but where if they spend the money, 20,000. They would not do that. It's a liability. Liability. You can do that, but your security was bad. And that It was used in this way. the credit It's a liability. company would deny the payment to the other vendor they are giving. They would send them the debit card. Okay, but the credit card, they could get their money. Did you cover that? We have a facility. What mails are coming to you? You can see in the email every day. Yeah, that's a good point. No, yeah, that's a good point. Somebody change your, you know, like a bank account, they take control of bank account, change your address. You would never know because mails will never come to your address. That is true. So, Or somebody steals the email and then change it. so every time when you go to the bank, okay,
try to take your weekly. No, what I do, every time when I go to the bank, and which is every, twice a week, but I take a statement for a whole week printout. Okay, so when you take the statement of a whole week printout, it's just 1 week printout. Your address, everything comes on it. Okay, what you have taken out or what is that? That is one thing, but I just wanted. US Postal Service has a facility, you can sign up. Every morning you will get an email. Yeah. What mails are coming to your inbox. If those email doesn't come, if those mail doesn't come, means somebody is stealing your mail. Because they could have changed your bank address and this thing. And they might be stealing it or whatever it is, it's very easy to do, but this is signing up every morning. You will get information. So you have to go to your postal site and do it. That's why. Your kid is on. I heard in the postal service cancelled. So you can just do it online. It's called USPS informed delivery. So you can go to USPS website. You will have to create a login account, password, and then you can sign up. They're going to send you an email with a picture of mail that you're supposed to receive. Can you repeat that SPS? Informed delivery. That's nice. I can put it in the group chat. WhatsApp chat will help. तो USPS. और जो हम क्रेडिट कार्ड की भी बात कर रहे थे फ्रॉड्स की, it's very important to monitor your credit reports. There are three credit bureaus, right? So monitor from all three of them. Once a year, you can get it for free. Once a year, you can get your credit report from each credit bureau for free, and it's online also. You can get through phone and email, but you can phone and mail, but you can also access online. And if you create the free account on their website, you can access it through. They all three offer free account as well. So at least once a year you can get it for free. Review it. कौन से credit cards आपके हैं, कौन से accounts आपके हैं, addresses. It will list addresses in yours. Yes. There's no need to get subscribed to each three at the same time. Do one now, do the second one 4 months later, and then the third one, another one, so you can see clearly. Yeah, I was going to say that. But if you sign up for the free account, they actually update it quite frequently. You don't even have to wait that long. But yeah, that's a good idea. A credit bureau say you pace it out. You don't get all three at the same time. Get one, 4 months later, get another one, 4 months later, get another. Also, with their free account, they can email you. Okay, you have a change in your credit bureau file. So if somebody did an inquiry, which was your social credit inquiry, it will email you, and you can log into their account. So they offer these services for free. You can put fees. जैसे आपको ये है कि भाई मेरे को अभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदना, लोन नहीं लेना, कुछ नहीं करना. You can put a freeze for 3 months, for 6 months. No, you could do it yearly or. Yearly, yeah. Permanent freeze, Permanent. when you want to open it, you open it. Yeah. I paid all my Yes. bills. You can do it for any duration, but what I'm saying is you can also do it for a period. Maybe 3 months के लिए freeze कर दो या whatever. So I would recommend doing that. And all this is they provide it for free. All you have to do is create an account on their website, and you can access all that information for free. Trust your instincts. That's the most important. We have looked at a few cases today. If it feels wrong, if it's too good to be true, it probably is. So be careful signing up for that vacation package or trying to get that gift card bonus you got. Just be very, very careful. कोई आपको फ्री में मुफ्त का कोई देने वाला नहीं. No free lunches, right? Chalo, that's it. We have covered some questions. Or कोई question है तो Question I have. हाँ जी. Sometimes we get a notice from the. You guys ask the question in the
Okay, we're gonna repeat the question so everybody. Okay. Yeah. But can everybody be quiet, please? Yeah. Thank you. Sometimes you get a notice from a major company like a T-Mobile or something. And they say your data is compromised and your account may be compromised. So in that case, I don't know what can be done. So the question is, if you get a letter from your financial institution or some other company that your data has been compromised, AT&T, your data has been compromised, what can we do? Because it's already compromised. So what you do is, first of all, the letter most likely will have, hey, this is the credit bureau. You can get your credit report from that. So first thing you do is, if you have created the online account, that's even better. First thing you do is put a freeze on your credit files. That's the first thing you do. Then you go through your credit bureau reports from all three bureaus, verify any change in information, new credit card, new account, change in mailing address, change in phone number, anything that does not seem right, you can report to that credit bureau. You can ask them to remove that information. They will investigate, and if your request is correct, they will remove that information from it. Monitor your credit report for a while. Change your passwords, especially the password and information you used on that priest website. Change the password right away. Don't click on links. If you start getting emails or whatever, because now they have your real data, so they might send you emails which look much more convincing. So be lookout for that. Make sure that you're paying extra attention to your mails and any information that's coming to you. And if you, by any chance, if you see a fraud, you can report to credit bureaus. If it's a bigger fraud, you can file with the financial institutions, your banks. You can even file a police report for that. But that's if you are a victim. But at the least, put a freeze on your credit reports, monitor your credit reports, check every information is correct, and change your passwords at the minimum. Other questions? Yeah, another question. Sometimes you get a phone call, either your mobile number or at home number. And I have heard about it. I don't know whether it's true or not. But let's say you don't answer and just keep the phone on for 2 seconds, they take away your data. Is that true? I talk about landline phone or cell phone? Cell phone. Cell phone. Yeah. The only thing they can take away is your location. So as far as I know, and I'm not claiming to be expert in everything, but as far as I know, they can take your location, but probably nothing more than that. That you put a location service, if you turn it off, Then they won't be. they won't be able to, right? Right. How do you turn up? Yeah. Well, they can triangulate your phone still. Even if you have that off, they can. So phone triangulation works based on the tower you're connected to. But that is really, I mean, I really doubt people will target that way. But the only thing they can take away is your location, as far as I know. If it's a landline, they already know your location. I mean, it's a fixed location. So on landline, they cannot take everything. Like doesn't have much. That's the reason they don't promote landlines anymore. They charge you so much. With all this technology, how come no one has caught the scammers who is scamming? Because the scammers are, I Google, Microsoft, you name any company, or including experts like you or anybody. You all are claiming that, oh, scammers do this, scammers do that. How come you don't catch the scammer itself? okay, I'll give a light-hearted answer to that instead of a serious And answer. no one is ever made public that this was a scammer and we punish them $1. No, it happens. It happens. It happens. Actually, they get punished. But I'm going to give a light-hearted answer to that instead of a very serious one, because you'll see why.
So basically, Google does punish scammers by hiring them because they want the focus is to make their system secure, more secure, and they do get reported. But for every 1% that gets reported, 50 people are created every day. That's one thing, like, who gave the example? You look on the Google, like, let's say I'm buying a shirt, and there are 10 businesses. And I look one, as you said, 59.99, and there was no information, right? Who put that on Google? Google itself. Google allows them to put on their own business site. And then they say, oh, you are fake, you are scammer. But Google itself is involved in that. So the Google again. So it's not that Google doesn't take it seriously. The problem is that they are in a business of making money. They are not in a business of helping people. So to make money, they have to open up loopholes. They have to compromise somewhere. That's the problem. Yeah. They do a lot of stuff, but up to a limit. If they block everything, they're not going to be able to do It will business. not be business. But I do believe with creating strict laws, like Europe has a more strict laws about online privacy, use of data, and things like that. Even in US, we can do much more. Once government regulations are there, companies are more serious. Without regulations, they'll say one thing, they'll do another. I don't know if I answered your question or not, but that's the best thing I can say. And I got a couple of times email from USPS, like United States Postal Service, that we have a package sitting here. Which will be- No. If you are expecting a package, No, if you are not expecting a package, it might be scammed. Sorry, Prakash bhai, आप कुछ आंसर दे रहे थे? Question mark. My thought is gone. So, if you are not expecting a package, do not click on the link. Unless somebody. No, but it's okay. Here is my answer to that question. Like any email that says AT&T, Yahoo, like your question was like AT&T emails that hey, you are using an old mail client, you have to upgrade it right away, otherwise you will not lose it. Never click on the email link on that, go to AT&T.com and do the same thing. So rather than like say USPS say package is there, no, go to USPS website, type in the Google and then say something is there rather than clicking on the link. That's the most thing. Yeah. Okay, so if I ignore it, I'm not going to. Yeah, ignore it, delete it. Like best thing to do it It's is a scam. put it in spam. Is- Just label the spam. Yeah. Especially if it is a text message. Yeah. अगर text message आया weird link के साथ कि आपका UPS package या USPS package waiting, 100% is a scam. Chances are very less if you're not expecting a package, you're getting a package. very interesting. No, just phone you to tell you they're sending you something. Well, guys. Bye. Most of the time, your data is not protected. Means what? Say you order something from Amazon, the package is expected, right? So immediately there will be a lot of people on the network will know. Yes. Okay, they are expecting a package, they'll start also doing scan. Because you are expecting. Yep. So now then suppose you fall for it, then. So when you're doing shopping, All this shopping, all the activity you generate on the web, you have to be very careful about the pattern with which you generate. Yeah. Let's say you go to Amazon one day, then for a few days stop the next order, don't buy, later on buy. Like say you buy from one device, you buy from another device. It's like device means your phone. Like Amazon, there's a- iPhone phone, and then sometimes buy from the. Okay. I'm trusting apps more and more these days. जैसे Amazon है या जो है, I think app is much more safer now because website में you can make a typo, you can make some mistake. There's a lot of human interaction involved in that. Yes, sir. When there's Actually, what he mentioned,
typo or something, sometimes it may not look like typo, but let's see USPS. They would write U in one particular different alphabet, which internally will not be U actually, it will be pointing somewhere else. U, it will look like USPS, but in reality, that U is not actual U. Yes. So apps are a little bit safer. Windows knows everything, how to cheat. प्लस आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, You need to know to protect yourself. किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वेबसाइट HTTPS से शुरू होती है. अगर S नहीं है, सिर्फ HTTP है, if there is no S, that means it's not a secure website. Yeah. But if it has HTTPS, what that S is telling you is the communication between your computer and that website is protected, is encrypted. Nobody in the middle can look at that. But if it is only HTTP, then anything you send over there, a lot of people can read that information. Because internet is a collection of network of computers. So when I access Google website, I'm probably going through 50 computers to get there. Any other questions? Thank you for listening. Thank you for taking our time. Next time we need it. We should do it more often.